वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डीएलसी प्रोटोकॉल का डिटेल स्टडी किया था, जिसमें हमने स्टॉप एंड वेट, गो बैक एनआरक्यू, एआरक्यू, ठीक है, ये सब प्रोटोकॉल्स का हमने स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एचडीएलसी एंड पॉइंट टू पॉइंट दैट इज़ ट्रिपल पी प्रोटोकॉल का डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So your HDLC is a data link control, so that is known as a high level data link control, which is the HDLC. So high level data link control is a group of communication protocol of the data link layer for transmitting the data between network points or nodes. Since its data link protocol data is organized into the frame, a frame is transmitted via the network to the destination that verifies its successful arrival. So it is a bit oriented protocol that is applicable for both point to point and multi point communication. तो HDLC एक डेटा लिंक प्रोटोकॉल है जिसमें कि डेटा विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमिटिंग मीन्स सेंडर टूवर्ड द रिसीवर through a network nodes, and it is a data link protocol that data is organized into the frame. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि large data is split up into the frames, and that frames are one by one transmitted from sender towards the receiver. So यही features इसमें यूज़ किया गया है, and the frame is transferred through a network towards the destination, and after reaching to the destination the resource or this receiver will verify that and gives the acknowledgement towards the sender like that. And this HDLC protocol is a bit oriented protocol that is applicable to both point to point and multi point networks. Then we'll see the transfer modes of the HDLC protocol. So here HDLC protocol supports two types of transfer modes. First one is the normal response mode, second will be the asynchronous balance mode. So normal response mode, that is NRM. So first we'll see this NRM mode. So here two types of stations are there. First one is the primary that sends the command or the data, and secondary station that can respond to receive the command. So it is used for both point to point and multi point communication. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है. In this there is the one primary station or machine A is there, and at the second end secondary machine is there or the secondary station is there, so it will be called as a B. So this primary station will send the information or command to this secondary station B, and after receiving this command successfully the secondary station will send the response, that is acknowledgement, to the primary station that this command is received successfully like that. So that type of system is called as a point to point communication. Second will be the multi point communication. So in that again there is the primary station, that is the machine A is there suppose, and in secondary station there are number of machine like B, C, D. Okay, so this primary station sends the command to these secondary stations. Then after receiving this command, this secondary station will send a respected response to this primary station that the data will be successfully received. So that is called as a multi-point, means there are multiple stations or machine at the secondary end. So that is the multi-point communication. So these are the basically two types of communication, point to point and multi point, and the HDLC protocol will support for both the communication. Second mode is asynchronous balance mode, which is the ABM. Here the configuration is balanced, that each station can both send commands and respond to the command. So it is used for only point to point communication. So asynchronous balance mode generally यूज होता है point to point communication में. So in that each station can both send a command and respond to the command, means it is a both way communication.
तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, देयर इज़ अ स्टेशन ए दैट इज़ अ प्राइमरी स्टेशन एंड देयर इज़ अ स्टेशन बी दैट इज़ अ सेकेंडरी स्टेशन। अगर प्राइमरी स्टेशन कुछ कमांड सेंड कर रहा है to the station B or secondary station, then after that secondary station will send its response and command. So both can send a command and responses at a time. So that type of mode is called as a asynchronous balance mode. So these are the two modes, that is NRM and the ABM, on which the HDLC protocol will be work. Then we'll see the actual HDLC frame structure. So here HDLC is a bit oriented protocol जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, where each frame contains the 6 field. ठीक है, तो HDLC फ्रेम में टोटल 6 फील्ड है. फर्स्ट फील्ड इज फ्लैग, सेकंड इज एड्रेस, थर्ड इज द कंट्रोल, फोर्थ फील्ड इज द पेलोड, फिफ्थ विल बी द FCS एंड द सिक्स वन विल बी द फ्लैग. ओके, तो उसके बाद हम वन बाय वन फील्ड का डिटेल स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट फील्ड विल बी द फ्लैग. सो फ्लैग इट इज़ 8-bit सीक्वेंस दैट मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम. ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्लैग फील्ड जो देख रहे हो ये स्टार्टिंग में भी है फ्रेम के एंड एट द एंडिंग ऑल्सो. सो इट इज़ द बिट पैटर्न ऑफ द फ्लैग. सो इट कंटेन्स द 1 byte that is 8 bits. So that sequence is 0 1 1 1 1 1 1 and 0. So that is the first field flag in HDLC frame. Second one will be the address. So it contains the address of the receiver. If the frame is sent by the primary station, it contains the address of the secondary station. तो इस एड्रेस फील्ड में जो रिसीवर है या आपका सेकेंडरी स्टेशन है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे IP एड्रेस होगा एड्रेस फील्ड में. ओके, एंड ऑल्सो द सेकेंडरी स्टेशन विल सेंड द रिस्पॉन्स टू द primary station. So at that time the primary station address is also available in this address field. So this address field is a from 1 byte to the several bytes. So that is the size of this address. Third field is the control field. So it is a 1 or 2 byte containing flow and error control information. So this control field is a 1 or 2 bytes in size and that contains the flow and error control जो अभी हमने ऑलरेडी स्टडी किया, जैसे स्लाइडिंग विंडो, स्टॉप एंड वेट ARQ. ओके, सो दिस टाइप ऑफ फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म इज यूज इन दिस कंट्रोल फील्ड. फोर्थ फील्ड विल बी द पेलोड. सो दिस कैरीज द डेटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर. इट्स लेंथ में वेरी फ्रॉम वन नेटवर्क टू द अनदर. ठीक है, तो जो एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट होगा थ्रू दिस फ्रेम, सो दैट विल बी इन द दिस पेलोड फील्ड एंड दिस इज द वेरिएबल बिकॉज द साइज ऑफ डेटा और द frame will be the variable. So that's why this payload field will be a variable one. And the fifth one is the FCS. So that is, it is a 2 byte or 4 byte frame that checks the sequence for error detection. ठीक है, so FCS field जो है वो 2 byte to 4 bytes है, that is the capacity, and that can be used to check the sequence for error detection. ठीक है, तो एरर डिटेक्शन के लिए FCS फील्ड का यूज़ होता है. एंड फॉर दैट द स्टैंडर्ड कोड यूज इज़ द CRC, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी कोड. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने CRC का डिटेल स्टडी किया था. तो एरर डिटेक्शन के लिए CRC कोड का यूज़ यहाँ पे किया जाता है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट फील्ड विल बी अगेन अ फ्लैग फील्ड. सो लाइक दैट दिस HDLC फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू द टोटल 6 field. Then we'll see the types of HDLC frame. So there are 3 types of HDLC frame. The type of frame is determined by the control field of the frame. मीन्स इसको जो डिफ्रेंशिएट किया गया है वो अकॉर्डिंग टू कंट्रोल फील्ड है. So there are 3 types of HDLC frame. First one is the I frame, second will be the S frame, and third one will be the
U frame is there. So first we'll see the I frame. So the I frame or information frame carry the user data from the network layer. Okay, this I is for information. So this information frame carries the actual data from the network layer. So they also include flow and error control information that is piggyback on user data. The first bit of control field of iframe is 0. तो यहाँ पे जो थर्ड फील्ड है वो कंट्रोल फील्ड है. सो फॉर इट इज iframe it is 0. So this frame contains the actual data from the network layer, and that includes the flow and error control information in this FCS field. So that is the one of the type of HDLC frame, which is the I frame. Second frame will be the S frame. So S frame or supervisory frame do not contain the information field. ठीक है, S means supervisory frame. So this S frame doesn't contain any information field. They are used for flow and error control. When piggybacking is not required, the first two bits of control field of S frame is 1 0. So in S frame, that is a supervisory frame, it doesn't contain any information field. जैसे I frame में information field था, ठीक है, that the user data is there in that. Here this user data or this information field is absent. Okay, so इसमें जो control field होगा that has a 2 bits, that is 1 0. ठीक है, जैसे I frame में control field 0 था, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल फील्ड में इट इज़ अ 2 bit, दैट इज़ 1 0 इज देयर. थर्ड फ्रेम विल बी द U frame. So that is U frame or unnumbered frame is there. U for unnumbered are used for myriad miscellaneous function. So like link management, it can contain the information field if required. The first 2 bits of the control field of U frame is 1 1. So this U frame is used for link management, and it optionally contains the information field if it is required, and the control field of U frame is 1 1. Then we'll see the actual U frame. So in U frame, the information field will be the optional, means if it is required then it is used, otherwise this link management information is there, and the control bits for this U frame is 1 1. So in this way there are 3 types of SDLC frame depending on the control bits. So for I frame the control bit is 0, for S frame the control bits are 1 0, and for U frame the control bits are 1 1, like that. So that will end this study of this SDLC protocol. Then the second type of protocol is the point to point protocol. It is also known as a, in short, triple P. So point to point protocol is a communication protocol of data link layer that is used to transmit a multi protocol data between 2 directly connected point to point computers. सो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल जो है वो डेटा लिंक लेयर का एक पार्ट है. वो यूज़ होता है ट्रांसमिशन के लिए मल्टी प्रोटोकॉल डेटा को बिटवीन 2 डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर. लाइक द कंप्यूटर ए इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू द फिजिकल मीडिया और द वायरलेस मीडिया टू द कंप्यूटर बी. जिस तरह से हम सेंडर एंड रिसीवर का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सेम. सो दैट इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट communication. It is a byte oriented protocol. Byte means 8 bits, and that is widely used in broadband communication having heavy loads and high speed. तो जनरली ट्रिपल पी प्रोटोकॉल यूज़ होता है ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन में, जहाँ की डेटा का जो साइज़ है वो लार्जर है एंड स्पीड रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो लार्जर और हायर. Then we'll see the services provided by this triple P protocol. The main services provided by point-to-point protocols are: first service is defining the frame format of the data to be transmitted.
जैसे हमने HDLC फ्रेम फॉर्मेट स्टडी किया, सेम फ्रेम फॉर्मेट जो डिफाइन होता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो सर्विस ऑफ दिस पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. सेकंड, डिफाइनिंग द प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशिंग लिंक बिटवीन टू पॉइंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ डेटा. ठीक है, दो पॉइंट मीन्स सेंडर एंड रिसीवर में लिंक क्रिएट करना. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ सर्विस ऑफ दिस पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल and how that data will be exchanged between these two computers or between these two machines. Third service will be the starting the method of encapsulation of network layer data in the frame, and the fourth one is the starting authentication rule for communicating devices. ठीक है, तो जैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है बिटवीन दिस सेंडर एंड रिसीवर और बिटवीन टू मशीन्स, so before that there is the authentication phase between the sender machine and the receiver machine. ठीक है, तो सबसे पहले authentication होता है, मीन्स इसमें कुछ बिट्स एक्सचेंज होंगे. आफ्टर दैट सक्सेसफुली authentication process, then this link will be established between this A and B computer, and after that the data will be transmitted through it. So that authentication process or the rules for the authentication process is also decided by this P protocol. Then next is providing address for network communication. Next, providing the connection over multiple links, means multiple links में ये कम्युनिकेशन या कनेक्शन प्रोवाइड करेगा. जैसे हमने मल्टी पॉइंट का भी एग्जांपल लिया था, मीन्स वहाँ पे एक सेंडर होगा, ठीक है, एंड देर आर मल्टीपल्स रिसीवर्स आर देयर. सो दैट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज द मल्टी पॉइंट नेटवर्क. And last one is the supporting a variety of network layer protocol by providing range on OS services. So these are the main services offered by this point to point protocol. Then we'll see the components of point to point protocol. So this point to point protocol is a layered protocol and having three components. First component is the encapsulation component. Second component is the link control protocol, that is LCP. Third component will be the authentication protocol, that is AP. So first is the encapsulation component. So it encapsulates the datagram so that it can transmit over the specified physical layer. ठीक है, तो datagram means the actual data or the information that can be transmitted from sender to the receiver through the फिजिकल लेयर. सो उसका जो इनकैप्सुलेशन है, ठीक है, तो उसके लिए इनकैप्सुलेशन कंपोनेंट यूज़ होता है. ठीक है, सेकंड वन इज़ द लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, कॉन्फ़िगरिंग, टेस्टिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग लिंक्स फॉर ट्रांसमिशन. सो लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल का जो यूज़ है वो दो पॉइंट्स के बीच या दो मशीन के बीच लिंक एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज़ होता है. सेकंड, कॉन्फ़िगरेशन. आफ्टर दैट, टेस्टिंग बिटवीन दिस टू मशीन्स एंड मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग द लिंक्स आफ्टर द सक्सेसफुल डेटा विल बी ट्रांसमिटेड, दैट लिंक विल बी removed. So these are the different functions of this link control protocol. Third one will be the authentication protocol, that is AP. This protocol authenticates the endpoints of use of the services. The two authentication protocols are there. First one, password authentication protocol, that is PAP, and a challenge handshake authentication protocol, that is CHAP. So there are two types of authentication protocol. So this will authenticate the end for use of the services. So these are the three main components of point to point protocol. Then we'll see the point to point protocol frame. जैसे हमने HDLC फ्रेम का डिटेल स्टडी किया था, सेम वे से हमें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का भी फ्रेम का स्टडी करना है. ठीक है, सो P इज़ अ बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. तो सबसे पहला पॉइंट है कि P एक बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है. बाइट मीन्स 8 बिट. Okay, so here each field of the frame is composed of one or more bytes. Okay,
सो इसमें जो फील्ड यूज़ किए सो दैट कंटेन्स one or more bytes. So there are different fields of this triple P frame. So total there are 7 fields are there. First one is the flag, second is the address, third is the control, fourth is the protocol, fifth is the payload, sixth is the FCS, and the 7 will be the flag. So we'll see one by one. So first field is the flag field in triple P frame. So it is a 1 byte that marks the beginning and end of the frame. ठीक है, तो जिस तरह से हमने HDLC प्रोटोकॉल में देखा कि फर्स्ट जो फील्ड है वो फ्लैग है एंड द एंड फील्ड इज ऑल्सो फ्लैग फील्ड. सो द बीट पैटर्न फॉर दिस फ्लैग फील्ड इज 0 1 1 1 1 1 1 0 is there. So it is a 1 byte means 8 bit is the size of this flag field. Second will be the address. So it is also a 1 byte field which is set to the 8 times 1. So in case of broadcast, ठीक है, so in case of broadcast messages this address field will be set to the 11111. So that is a 1 byte field. Third one will be the control field. So control field size is also 1 byte and it sets to the constant value, that is 1 1 0 0 0 0 0 0. So it is also 8 bit. So it has a constant value, that is a 8 bit number. Next one will be the protocol. Protocol field has a size of 1 or 2 bytes that defines the type of data content in the payload field. ठीक है, तो एक्चुअल जो डेटा रहेगा पेलोड फील्ड में वो किस टाइप का डेटा है वो डिसाइड करेगा आपका ये प्रोटोकॉल फील्ड. फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आर यूज. सो इट इज़ द 1 or 2 byte size of this protocol field. Next is the payload. So this carries the data from network layer. तो पेलोड फील्ड में एक्चुअल डेटा रहेगा जो सेंड करना है सेंडर टूवर्ड्स द रिसीवर. सो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेलोड फील्ड विल बी द 1500 बाइट्स. तो मैक्सिमम जो लेंथ रहेगा डेटा का, ठीक है, विद इन अ 1 फ्रेम इज द 1500 बाइट्स. नेक्स्ट फील्ड विल बी द FCS. Its size is 2 byte to the 4 bytes. So it is used for the frame check sequence for error detection, and for that again CRC, that is cyclic redundancy code, is used, like which are used in the HDLC protocol. ठीक है, तो HDLC प्रोटोकॉल में FCS का जो साइज़ है सेम यहाँ पे वही साइज़ है 2 and 4 bytes, and that is used for the error detection purpose, and for that purpose CRC codes are used. So that is the detailed frame format for this triple P protocol. So that will end the study of this point to point protocol. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने दोनों प्रोटोकॉल कवर किए, एक HDLC एंड सेकंड वन इज़ द पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बी पार्ट स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का, दैट इज़ द मीडिया एक्सेस कंट्रोल. So thank you.